एक्सरसाइज 1.4 थर्ड सम कर रहे हैं हम लोग. थर्ड सम है 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 85. सेकेंड इक्वेशन 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 89. 27 अपॉन x माइनस 2 स्प्लिट करोगे 27 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2 निकाल दो एंड पुट हियर a. सो यू गेट 27a. 31 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3, 1 अपॉन वाई प्लस 3 निकाल दो तो 31 इंटू बी मतलब 1 अपॉन वाई प्लस 3 है, वहाँ पे मैंने b पुट किया तो वी गेट 31b. तो 27a प्लस 31b इक्वल टू 85. सेम लाइक दैट इन सेकेंड इक्वेशन 31a plus 27b equal to 89. See here in the third equation the coefficients 27 and 31 which are interchanged in the fourth equation 31 and 27 a and b. So in this type of equation we can add first and subtract. So we get two equations, solve that two equation you get a and b, then resubstitute we get x and y. So first adding third and fourth equation. So add sorry 27a plus 31b equal to 85. 31a plus 27b equal to 89. Add कर रहे हो, no need to change the sign. 58a plus 58b equal to 174. Divide both the side of the equation by 58. So this equation divided by 58. 58a upon 58 cancel करो 58 a plus 58b upon 58 that is b equal to 174 divided by 58. 58 3s are 174. So you get fifth equation. Now subtract third and fourth equation. See here 27a 31b equal to 85. 30a 1a plus 27b equal to 89. Now for the subtraction we change the sign of second equation. Plus 31 minus 31 plus 27 minus 27 plus 89 minus 89. Now 31 minus 27 4. Bigger number 31 so minus 4a. Bigger number 31 so write down plus first here and then minus this one you get 4b equal to 89 minus 85 4. Bigger number 89 therefore sign is minus. So 4a minus 4a plus 4b equal to minus 4. Divide equation by 4. Now you get minus a 4 कट हो जाएगा plus b equal to minus 4 divided by 4 that is minus 1. So you get sixth equation. So fifth and sixth equation, see here plus a and minus a that is opposite sign. If opposite sign rule है opposite sign then addition. So we add fifth and sixth equation. A plus b equal to 3 minus a plus b equal to minus 1 plus a minus a cancel plus b that is 2b equal to 3 minus 1 2. b equal to 2 को शिफ्ट करोगे 2 here 2 मल्टीप्लाई विथ b शिफ्ट हो जाएगा देन डिवाइड बाय 2. सो b इक्वल टू 2 अपॉन 2 1 1 कट हुआ 2 1 जार 2 1 जार सो b इक्वल टू 1. सो वी गेट b इक्वल टू 1. नाउ वी फाइंड आउट a. पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स्थ एनी वन इक्वेशन. I put in a fifth equation. Fifth equation a plus b equal to 3. a plus 1 equal to 3. Now plus 1 shift हो जाएगा तो it becomes minus. So 3 minus 1 and therefore a equal to 2. So you get a equal to 2, b equal to 1. Now resubstitute. Resubstituting a and b. Okay, now a that is your x minus 2. First write down a equal to 2. So value of a 1 upon x minus 2. तो यहाँ से a निकलेगा और यहाँ पे आएगा 1 upon x minus 2 equal to 2. डिनोमिनेटर है ब्रैकेट डाल दो क्योंकि 2 टर्म्स है ये शिफ्ट होके 2 के पास मल्टीप्लाई करेगा. यहाँ पे डिवाइड इसका मतलब है डिनोमिनेटर आप निकाल दो. सो वी गेट वैल्यू ऑफ x. सो यहाँ पे 1 एज इट इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x minus 2. Write down bracket because here are 2 terms. So bracket. Now 2 multiply x.
So 1 equal to 2x. 2 into 2. Therefore minus 4 minus sign है 2 2s are 4. This is your number. So shift here toward 1. So plus minus 4 shift होने के बाद plus 4. So 1 plus 4 equal to 2x. 1 plus 4 5. 5 equal to 2x. Now 2 that is multiply. So shift 5 upon 2 equal to x. So we get x equal to 5 upon 2. Now b. B equal to 1. Write down first b equal to 1. Then what is the value of b? 1 upon y plus 3. So 1 upon y plus 3 equal to 1. Again write down bracket and then shift. So 1 equal to 1 in bracket y plus 3. 1 equal to 1 into y, y. 1 into 3, 3. Now shift 3 plus 3 shift के बाद minus 3 equal to y. 3 minus 1, 2 equal to y. 3 is your bigger number. So give the sign minus and therefore y equal to minus 2. So your solution of the equation, x equal to 5 upon 2 and y equal to minus 2. This is your solution of the equation. This sum is for 4 marks in board exam.